क्या रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। सारे ग्रो कर रहे हैं। भीड़ में खड़े खड़े, झूले पर पड़े पड़े, आज हलचल है। एंथू न्यू कमर्स या ज्ञानी बड़े बड़े ग्रो कर रहे हैं। सारे ग्रो कर रहे हैं। रिक्शा जानू संग डेट पे जाते हैं या अपनी टीम को फाइनल जिताते हैं। यारों को नए फंडे सिखाते हैं। मचिंगला इधर पढ़नो अवड़ा सुपर मची या फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं। इससे कम नहीं हो पाएगा मैडम। कुछ तो कम कीजिए। नेता और अपनों को कोई गिफ्ट दिलाते। तो बात अगर इंडिया की हो तो सारे 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 येल्लर में सारे कर रहे हैं ग्रो। ग्रो तो आप भी SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, बस ग्रो करो। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, ग्रो जरूर करते हैं। सर आपका बिल मैं देता हूँ। अनुज इसको थोड़ी देर। औरों का आप पे भरोसा ग्रो होता है। और आपका खुद पे इधर आने वाले दूसरों की नजरों में बड़े हो जाते हैं। अरे बहुत शानदार। अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। बढ़िया नाम है। हाँ थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। मार्केट को समझने वाले भीड़ में ना अलग ही दिखते हैं। ये कुछ हटके करने से डरते नहीं है। ये मार्केट पेशेंस सिखाता है, इन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है। और तो और आपके लिए स्मार्ट बॉय रिस्पेक्ट कमाता है। क्योंकि जो ग्रो करते हैं वो लाइफ में ग्रो करते हैं ग्रो करते हैं। ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो, SIP करो, इन्वेस्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। बहू, आज जो कुछ हमारे पास है सब इनकी देन है। एक अगरबत्ती की दुकान से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। प्रणाम दादाजी। दादाजी, ये तो पुष्पा अगरबत्ती के मालिक हैं, घनश्याम दास। इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, इसीलिए आज ये सब कुछ है। जो आगे की सोचते हैं ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो फॉर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड IPO। और ये कौन सी कंपनी के मालिक हैं? ये तो दादाजी हैं। विराज रायचंद स्टील। आपने वरदान स्टील का नाम सुना होगा। ऑफ कोर्स। आप मिस्टर वरदान के बेटे हैं? नहीं छोटे भाई? नहीं दामाद? नहीं। फिर शेयर होल्डर। सही टाइम पे उनके शेयर्स खरीदे, तभी आज मैं यहाँ हूँ। जो आगे की सोचते हैं ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो फॉर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड IPO। सर कॉफी। नो थैंक यू। लगता है आपने टी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है। And for that reason, I'm out. यार इस दुनिया में एक जगह ऐसी है जहाँ आपको कोई जज नहीं करता। शेयर मार्केट। यहाँ आपकी मूंछ कितनी आई है कोई केयर नहीं करता। और एक दूसरे के अगेंस्ट ये मार्केट कंपेयर नहीं करता। हाँ, और आपकी काबिलियत पे डाउट करना। यहाँ कोई डेयर नहीं करता। डिग्री कहाँ से की है? अरे इधर कोई नहीं पूछता। ये सब लड़कियों को शोभा नहीं देता। इधर ऐसा कोई नहीं सोचता। Look top, bird blowing. इंग्लिश लिटिल वीक। देखिए इस मार्केट में दिस ऑल्सो ठीक। बेकार के शोर के लिए मार्केट बहरा है। वो नजर लगाने वालों के लिए मार्केट अंधा है। पर सवालों के जवाब देने के लिए अब सोच मॉडर्न होनी चाहिए या क्लासिक। यहाँ कोई नहीं करता तर्क। फोक से खाओ या फिर उंगलियों से, नहीं पड़ता है किसी को फर्क। और हाथ में हो जैसा भी फोन। इस मार्केट में है सबका इक्वल हक। क्योंकि आप जो भी हो, जहाँ से भी हो, जैसे भी हो। हाँ उसे ये मार्केट सबका है। सबका है। तो SIP करो, इन्वेस्ट करो या IPO,
Download Groww. Ready for the next big IPO? Apply for it on Groww. Open your free demat account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Groww now for stocks, mutual funds, and IPOs. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्टॉक शब्द सुनते ही ना लोग कहते हैं पागल है क्या। अभी तो हम जवान हैं। और आप? अरे हम कहाँ, इतना बड़े बड़े लोग का खेल है। पर ये स्टॉक मार्केट किस खेत की मूली है कि हमसे ना हो पाएगा? हाँ, कौन कहता है यहाँ सिर्फ फुल पैंट वाले ही इन्वेस्ट करते हैं। इधर हाफ पैंट्स भी चलेंगे और सफेद बाल छोड़ो, इधर नीले भी दौड़ेंगे। सूट्स की जरूरत क्यों? सलवार सूट में भी हो सकता। और आपकी गाड़ी में पहिए 4 हो या 2, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। जारगन झाड़ने वाले तो बहुत हैं, पर करेक्ट। और सिर्फ सीनियर्स क्यों? इधर एक इंटर्न भी आ सकता है। अब चाहे आप अंकल हो या किसी को अंकल बुलाने वाले, इधर कोई भी मचा सकता है, क्योंकि ये मार्केट सबका है बॉस। सबका है बॉस। डाउनलोड ग्रो, अकाउंट खोलो, मार्केट समझो, इन्वेस्ट करो। आइए आजकल के फाइनेंशियल ट्रेंड्स क्या है वो देखते हैं। आजकल इंडिया में सब कर क्या रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। सारे ग्रो कर रहे हैं। भीड़ में खड़े खड़े, झूले पर पड़े पड़े, आज हलचल है। एंथू न्यू कमर्स या ज्ञानी बड़े बड़े, ग्रो कर रहे हैं। सारे ग्रो कर रहे हैं। रिक्शा जानू संग डेट पे जाते हैं, या अपनी टीम को फाइनल जिताते हैं, यारों को नए फंडे सिखाते हैं, मचिंगला இதுதான் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் सुपर मची, या फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं। इससे कम नहीं हो पाएगा मैडम। कुछ तो कम कीजिए। नेता और अपनों को कोई गिफ्ट दिलाते। तो बात अगर इंडिया की हो तो सारे எல்லாரும் सारे कर रहे हैं ग्रो। तो आप भी SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, बस ग्रो करो। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, ग्रो जरूर करते हैं। सर आपका बिल मैं देता हूँ। अनुज, इसको थोड़ी देर। औरों का आप पे भरोसा ग्रो होता है, और आपका खुद पे इधर आने वाले दूसरों की नजरों में बड़े हो जाते हैं। अरे बहुत शानदार है। अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। बढ़िया नाम है। हाँ, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। मार्केट को समझने वाले भीड़ में ना अलग ही दिखते हैं। ये कुछ हटके करने से डरते नहीं है। ये मार्केट पेशेंस सिखाता है, इन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है। और तो और आपके लिए स्मार्ट बॉय रिस्पेक्ट कमाता है। क्योंकि जो ग्रो करते हैं वो लाइफ में लाइफ में ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो, SIP करो, इन्वेस्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। बहू, आज जो कुछ हमारे पास है सब इनकी देन है। एक अगरबत्ती की दुकान से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। प्रणाम दादाजी। दादाजी, ये तो पुष्पा अगरबत्ती के मालिक हैं घनश्याम दास। इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, इसीलिए आज ये सब कुछ है। जो आगे की सोचते हैं ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो फॉर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड IPO। और ये कौन सी कंपनी के मालिक है? ये तो दादाजी हैं। विराज रायचन स्टील। आपने वरदान स्टील का नाम सुना होगा। ऑफ कोर्स। आप मिस्टर प्रधान के बेटे हैं? नहीं छोटे भाई? नहीं दामाद? नहीं, फिर शेयर होल्डर। सही टाइम पे उनके शेयर्स खरीदे, तभी आज मैं यहाँ हूँ। जो आगे की सोचते हैं ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो फॉर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड IPO। सर कॉफी। नो थैंक यू। लगता है आपने टी कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट किया है। And for that reason, I'm out. यार, इस दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां आपको कोई जज नहीं करता। शेयर मार्केट। यहाँ आपकी मूछ कितनी आई है
कोई केयर नहीं करता। और एक दूसरे के अगेंस्ट ये मार्केट कंपेयर नहीं करता। हाँ, और आपकी काबिलियत पे डाउट करना। यहाँ कोई डेयर नहीं करता। डिग्री कहाँ से की है? अरे इधर कोई नहीं पूछता। ये सब लड़कियों को शोभा नहीं देता। इधर ऐसा कोई नहीं सोचता। लुक टॉक बर्ड ब्लूइंग इंग्लिश लिटिल वीक। देखिए इस मार्केट में दिस ऑल्सो टी। बेकार के शोर के लिए मार्केट बहरा है। वो नजर लगाने वालों के लिए मार्केट अंधा है। पर सवालों के जवाब देने के लिए अब सोच मॉडर्न होनी चाहिए या क्लासिक। यहाँ कोई नहीं करता तर्क। फोक से खाओ या फिर उंगलियों से, नहीं पड़ता है किसी को फर्क। और हाथ में हो जैसा भी फोन, इस मार्केट में है सबका इक्वल हक। क्योंकि आप जो भी हो, जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, ये मार्केट सबका है। सबका है। तो SIP करो, इन्वेस्ट करो या IPO। डाउनलोड ग्रो। Ready for the next big IPO? Apply for it on Groww. Open your free demat account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Groww now for stocks, mutual funds and IPOs. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्टॉक शब्द सुनते ही ना लोग कहते हैं पागल है क्या। अभी तो हम जवान हैं। और आप? अरे हम कहाँ, इतना बड़े बड़े लोग का खेल है। पर ये स्टॉक मार्केट किस खेत की मूली है कि हमसे ना हो पाएगा? हाँ, कौन कहता है यहाँ सिर्फ फुल पैंट वाले ही इन्वेस्ट करते हैं। इधर हाफ पैंट्स भी चलेंगे। और सफेद बाल छोड़ो, इधर नीले भी दौड़ेंगे। सूट्स की जरूरत क्यों? सलवार सूट में भी हो सकता। और आपकी गाड़ी में पहिए 4 हो या 2, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। जारगन झाड़ने वाले तो बहुत हैं, पर करेक्ट। और सिर्फ सीनियर्स क्यों? इधर एक इंटर्न भी आ सकता है। अब चाहे आप अंकल हो या किसी को अंकल बुलाने वाले, इधर कोई भी मचा सकता है, क्योंकि ये मार्केट सबका है बॉस। सबका है बॉस। डाउनलोड ग्रो, अकाउंट खोलो, मार्केट समझो, इन्वेस्ट करो। आइए आजकल के फाइनेंशियल ट्रेंड्स क्या है वो देखते हैं। आजकल इंडिया में सब कर क्या रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। सारे ग्रो कर रहे हैं। भीड़ में खड़े खड़े, झूले पर पड़े पड़े, आज हलचल है। एंथू न्यू कमर्स या ज्ञानी बड़े बड़े, ग्रो कर रहे हैं। सारे ग्रो कर रहे हैं। रिक्शा जानू संग डेट पे जाते हैं मनदीप, या अपनी टीम को फाइनल जिताते हैं, यारों को नए फंडे सिखाते हैं, मचिंगला இதுதான் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் सुपर मची, या फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं। इससे कम नहीं हो पाएगा मैडम। कुछ तो कम कीजिए। नेता और अपनों को कोई गिफ्ट दिलाते। तो बात अगर इंडिया की हो तो सारे எல்லாருமே सारे कर रहे हैं ग्रो। तो आप भी SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, बस ग्रो करो। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, ग्रो जरूर करते हैं। सर आपका बिल। मैं देता हूँ। अनुज, इसको थोड़ी देर। औरों का आप पे भरोसा ग्रो होता है। और आपका खुद पे। इधर आने वाले दूसरों की नजरों में बड़े हो जाते हैं। अरे बहुत शानदार है। अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। बढ़िया नाम है। हाँ, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। मार्केट को समझने वाले भीड़ में ना अलग ही दिखते हैं। ये कुछ हटके करने से डरते नहीं है। ये मार्केट पेशेंस सिखाता है, इन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है। और तो और आपके लिए स्मार्ट बॉय रिस्पेक्ट कमाता है, क्योंकि जो ग्रो करते हैं वो लाइफ में
ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं। ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो। SIP करो, इन्वेस्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। बहू, आज जो कुछ हमारे पास है सब इनकी देन है। एक अगरबत्ती की दुकान से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। प्रणाम दादाजी। दादाजी, ये तो पुष्पा अगरबत्ती के मालिक हैं घनश्याम दास। इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, इसीलिए आज ये सब कुछ है। जो आगे की सोचते हैं ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो फॉर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड IPO। और ये कौन सी कंपनी के मालिक हैं? ये तो दादाजी हैं। विराज रायचंद, रायचंद स्टील। स्टील। आपने वरदान स्टील का नाम सुना होगा। ऑफ कोर्स। आप मिस्टर प्रधान के बेटे हैं? नहीं। छोटे भाई? नहीं नहीं दामाद? नहीं। फिर? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर? सही टाइम पे उनके शेयर्स खरीदे, तभी आज मैं यहाँ हूँ। जो आगे की सोचते हैं ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो फॉर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड IPO। सर कॉफी। नो थैंक यू। लगता है आपने टी कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट किया है। And for that reason, I'm out. यार, इस दुनिया में एक जगह ऐसी है जहाँ आपको कोई जज नहीं करता। शेयर मार्केट। यहाँ आपकी मूंछ कितनी आई है कोई केयर नहीं करता। और एक दूसरे के अगेंस्ट ये मार्केट कंपेयर नहीं करता। हाँ, और आपकी काबिलियत पे डाउट करना। यहाँ कोई डेयर नहीं करता। डिग्री कहाँ से की है? अरे इधर कोई नहीं पूछता। ये सब लड़कियों को शोभा नहीं देता। इधर ऐसा कोई नहीं सोचता। Look top, bird growing. English little weak. देखिए, इस मार्केट में दिस ऑल्सो ठीक। बेकार के शोर के लिए मार्केट बहरा है। वो नजर लगाने वालों के लिए मार्केट अंधा है। पर सवालों के जवाब देने के लिए अब सोच मॉडर्न होनी चाहिए या क्लासिक। यहाँ कोई नहीं करता तर्क। फोक से खाओ या फिर उंगलियों से, नहीं पड़ता है किसी को फर्क। और हाथ में हो जैसा भी फोन, इस मार्केट में है सबका इक्वल हक। क्योंकि आप जो भी हो, जहाँ से भी हो, Wherever, जैसे भी हो, how से ये मार्केट सबका है। सबका है। तो SIP करो, इन्वेस्ट करो या IPO। डाउनलोड ग्रो। Ready for the next big IPO? Apply for it on Groww. Open your free demat account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Groww now for stocks, mutual funds, and IPOs. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्टॉक शब्द सुनते ही ना लोग कहते हैं पागल है क्या। अभी तो हम जवान हैं। और आप? अरे हम कहाँ, इतना बड़े बड़े लोगों का खेल है। पर ये स्टॉक मार्केट किस खेत की मूली है कि हमसे ना हो पाएगा? हाँ, कौन कहता है यहाँ सिर्फ फुल पैंट वाले ही इन्वेस्ट करते हैं। इधर हाफ पैंट्स भी चलेंगे। और सफेद बाल छोड़ो, इधर नीले भी दौड़ेंगे। सूट्स की जरूरत क्यों? सलवार सूट में भी हो सकता है। और आपकी गाड़ी में पहिए 4 हो या 2, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। जारगन झाड़ने वाले तो बहुत हैं, पर करेक्ट। और सिर्फ सीनियर्स क्यों? इधर एक इंटर्न भी आ सकता है। अब चाहे आप अंकल हो या किसी को अंकल बुलाने वाले, इधर कोई भी मचा सकता है, क्योंकि ये मार्केट सबका है बॉस। सबका है बॉस। डाउनलोड ग्रो, अकाउंट खोलो, मार्केट समझो, इन्वेस्ट करो। आइए आजकल के फाइनेंशियल ट्रेंड्स क्या है वो देखते हैं। आजकल इंडिया में सब कर क्या रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। सारे ग्रो कर रहे हैं। भीड़ में खड़े खड़े, झूले पर पड़े पड़े, आज हलचल है। एंथू न्यू कमर्स या ज्ञानी बड़े बड़े ग्रो कर रहे हैं। सारे ग्रो कर रहे हैं। रिक्शा जानू संग डेट पे जाते हैं मनदीप, या अपनी टीम को फाइनल जिताते हैं, यारों को नए फंडे सिखाते हैं। मचिंगला इधर पढ़नो अवड़ा सुपर मची, या फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं। इससे कम नहीं हो पाएगा मैडम। कुछ तो कम कीजिए। नेता और अपनों को कोई गिफ्ट दिलाते। तो बात अगर इंडिया की हो तो सारे सारे येलो में कर रहे हैं ग्रो। तो
आप भी SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, बस ग्रो करो। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, ग्रो जरूर करते हैं। सर आपका बिल मैं देता हूँ। अनुज, इसको थोड़ी देर। औरों का आप पे भरोसा ग्रो होता है। और आपका खुद पे कॉन्फिडेंस शो होता है। इधर आने वाले दूसरों की नजरों में बड़े हो जाते हैं। अरे बहुत शानदार है। अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। बढ़िया नाम है। हाँ, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। मार्केट को समझने वाले भीड़ में ना अलग ही दिखते हैं। ये कुछ हटके करने से डरते नहीं है। ये मार्केट पेशेंस सिखाता है, इन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है। और तो और आपके लिए स्मार्ट बॉय, रिस्पेक्ट कमाता है। क्योंकि जो ग्रो करते हैं वो लाइफ में लाइफ में ग्रो करते हैं। ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो, SIP करो, इन्वेस्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। बहू, आज जो कुछ हमारे पास है सब इनकी देन है। एक अगरबत्ती की दुकान से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। प्रणाम दादाजी। दादाजी, ये तो पुष्पा अगरबत्ती के मालिक हैं, घनश्याम दास। इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, इसीलिए आज ये सब कुछ है। जो आगे की सोचते हैं ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो फॉर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड IPO। और ये कौन सी कंपनी के मालिक है? ये तो दादाजी हैं। विराज रायचंद स्टील। स्टील। आपने वरदान स्टील का नाम सुना होगा। ऑफ कोर्स। आप मिस्टर प्रधान के बेटे हैं? नहीं छोटे भाई? नहीं नहीं दामाद? नहीं। फिर शेयर होल्डर। शेयर होल्डर? सही टाइम पे उनके शेयर्स खरीदे, तभी आज मैं यहाँ हूँ। जो आगे की सोचते हैं ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो फॉर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड IPO। सर, कॉफी। नो थैंक यू। लगता है आपने ठीक कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है। And for that reason, I'm out. यार इस दुनिया में एक जगह ऐसी है जहाँ आपको कोई जज नहीं करता, शेयर मार्केट। यहाँ आपकी मूंछ कितनी आई है कोई केयर नहीं करता, और एक दूसरे के अगेंस्ट ये मार्केट कंपेयर नहीं करता। हाँ, और आपकी काबिलियत पे डाउट करना, यहाँ कोई डेयर नहीं करता। डिग्री कहाँ से की है? अरे इधर कोई नहीं पूछता। ये सब लड़कियों को शोभा नहीं देता। इधर ऐसा कोई नहीं सोचता। Look top, bird blowing. English little weak. देखिए इस मार्केट में दिस ऑल्सो ठीक। बेकार के शोर के लिए मार्केट बहरा है, वो नजर लगाने वालों के लिए मार्केट अंधा है, पर सवालों के जवाब देने के लिए अब सोच मॉडर्न होनी चाहिए या क्लासिक। यहाँ कोई नहीं करता तर्क। फोक से खाओ या फिर उंगलियों से, नहीं पड़ता है किसी को फर्क। और हाथ में हो जैसा भी फोन, इस मार्केट में है सबका इक्वल हक, क्योंकि आप जो भी हो, जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, ये मार्केट सबका है। सबका है। तो SIP करो, इन्वेस्ट करो या IPO। डाउनलोड ग्रो। Ready for the next big IPO? Apply for it on Groww. Open your free demat account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Groww now for stocks, mutual funds, and IPOs. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्टॉक शब्द सुनते ही ना लोग कहते हैं पागल है क्या। अभी तो हम जवान हैं। और आप? अरे हम कहाँ, इतना बड़े बड़े लोग का खेल है। पर ये स्टॉक मार्केट किस खेत की मूली है कि हमसे ना हो पाएगा? हाँ, कौन कहता है यहाँ सिर्फ फुल पैंट वाले ही इन्वेस्ट करते हैं। इधर हाफ पैंट्स भी चलेंगे। और सफेद बाल छोड़ो, इधर नीले भी दौड़ेंगे। सूट्स की जरूरत क्यों? सलवार सूट में भी हो सकता है। और आपकी गाड़ी में पहिए 4 हो या 2, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। जारगन झाड़ने वाले तो बहुत हैं, पर करेक्ट। और सिर्फ सीनियर्स क्यों? इधर एक इंटर्न भी आ सकता है। अब चाहे आप अंकल हो या किसी को अंकल बुलाने वाले, इधर कोई भी मचा सकता है, क्योंकि ये मार्केट ये मार्केट सबका है बॉस। सबका है बॉस। डाउनलोड ग्रो
अकाउंट खोलो, मार्केट समझो, इन्वेस्ट करो। आइए आजकल के फाइनेंशियल ट्रेंड्स क्या है वो देखते हैं। आजकल इंडिया में सब कर क्या रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। सारे ग्रो कर रहे हैं। भीड़ में खड़े खड़े, झूले पर पड़े पड़े, आज हलचल है। एंथू न्यू कमर्स या ज्ञानी बड़े बड़े ग्रो कर रहे हैं। सारे ग्रो कर रहे हैं। रिक्शा जानू संग डेट पे जाते हैं मनदीप या अपनी टीम को फाइनल जिताते हैं, यारों को नए फंडे सिखाते हैं। मचिंगला इधर पढ़नो अवड़ा सुपर मची या फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं। इससे कम नहीं हो पाएगा मैडम। कुछ तो कम कीजिए। नीता और अपनों को कोई गिफ्ट दिलाते। तो बात अगर इंडिया की हो तो सारे 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 येल्लर में सारे कर रहे हैं ग्रो। ग्रो। तो आप भी SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, बस ग्रो करो। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, ग्रो जरूर करते हैं। सर आपका बिल। मैं देता हूँ। अनुज इसको थोड़ी देर। औरों का आप पे भरोसा ग्रो होता है। और आपका खुद पे कॉन्फिडेंस शो होता है। इधर आने वाले दूसरों की नजरों में बड़े हो जाते हैं। अरे बहुत शानदार। अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। बढ़िया नाम है। हाँ थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। मार्केट को समझने वाले भीड़ में ना अलग ही दिखते हैं। ये कुछ हटके करने से डरते नहीं है। ये मार्केट पेशेंस सिखाता है। इन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है। और तो और आपके लिए स्मार्ट बॉय एकदम। रिस्पेक्ट कमाता है। क्योंकि जो ग्रो करते हैं वो लाइफ में लाइफ में ग्रो करते हैं। ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो, SIP करो, इन्वेस्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। बहू, आज जो कुछ हमारे पास है सब इनकी देन है। एक अगरबत्ती की दुकान से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। प्रणाम दादाजी। दादाजी, ये तो पुष्पा अगरबत्ती के मालिक हैं, घनश्याम दास। इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, इसीलिए आज ये सब कुछ है। जो आगे की सोचते हैं ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो फॉर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड IPO। और ये कौन सी कंपनी के मालिक हैं? ये तो दादाजी हैं। विराज रायचन, रायचन स्टील। स्टील। आपने वरदान स्टील का नाम सुना होगा। ऑफ कोर्स। आप मिस्टर वरदान के बेटे हैं? नहीं छोटे भाई? नहीं नहीं दामाद? नहीं। फिर शेयर होल्डर। शेयर होल्डर? सही टाइम पे उनके शेयर्स खरीदे, तभी आज मैं यहाँ हूँ। जो आगे की सोचते हैं ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो फॉर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड IPO। सर कॉफी। नो थैंक यू। लगता है आपने ठीक कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट किया है। And for that reason, I'm out. यार इस दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां आपको कोई जज नहीं करता। शेयर मार्केट। यहाँ आपकी मूछ कितनी आई है कोई केयर नहीं करता। और एक दूसरे के अगेंस्ट ये मार्केट कंपेयर नहीं करता। हाँ, और आपकी काबिलियत पे डाउट करना। यहाँ कोई डेयर नहीं करता। डिग्री कहाँ से की है? अरे इधर कोई नहीं पूछता। ये सब लड़कियों को शोभा नहीं देता। इधर ऐसा कोई नहीं सोचता। Look top, bird growing. English little weak. देखिए इस मार्केट में दिस ऑल्सो ठीक। बेकार के शोर के लिए मार्केट बहरा है। वो नजर लगाने वालों के लिए मार्केट अंधा है। पर सवालों के जवाब देने के लिए अब सोच मॉडर्न होनी चाहिए या क्लासिक। यहाँ कोई नहीं करता तर्क। फोक से खाओ या फिर उंगलियों से, नहीं पड़ता है किसी को फर्क। और हाथ में हो जैसा भी फोन।
Dear shareholders, good afternoon and a warm welcome to the 8th Annual General Meeting of Billion Brains Garage Ventures Limited. For the smooth conduct of the meeting, all the shareholders will be put on mute mode. The audio and the video will be unmuted for those shareholders who have registered themselves as speakers during the Q&A session. Please note that as per the statutory requirements, the proceedings of the annual general meeting are being recorded. I now invite our chairman, Mr. Gaurang Shah, to please initiate the proceedings. Over to you, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to welcome you to the 8th Annual General Meeting and first AGM post listing of Billion Brains Garage Ventures Limited. I hope all of you are safe and in good health. Before I start the proceedings, let me introduce myself and other board members. I, Gaurang Shah, am chairman of the board and stakeholders relationship committee. Mr. Lalit Kesre, full-time director and CEO. Mr. Harsh Jain, full-time director and CEO. Mr. Neeraj Singh, full-time director. Joining through VC, we have got Mr. Ishant Bansal, full-time director and CFO. Miss Neetu Kashiramka, independent director and chairperson of audit committee. Dr. Neeru Chaudhary, independent director and chairperson of nomination and remuneration committee. Mr. Ankit Nagori, independent director and chairperson of corporate social responsibility committee. Apart from these who are not on the screen, we have Mr. Sagar Lulla, representing BSR and Company, LLP, our statutory auditors. Also, we have CS Nilesh Shah, practicing company secretary, the secretarial auditor, and the scrutinizer for the AGM to scrutinize the remote e-voting and e-voting process in a fair and transparent manner. The proceedings of this AGM is being webcast live on the e-voting website of MUFG In Time India Private Limited. We have the requisite quorum present for our meeting, and therefore I call this meeting to order and request Roshan Dave, our company secretary, to take us through the regulatory matters and general instruction pertaining to the AGM. Over to you, Roshan. Thank you, Chairman, sir. Good afternoon, dear shareholders. This meeting is being conducted through video conference in accordance with the provision of Companies Act 2013 and SEBI. The annual report containing the board's report, the auditor's report, the financial statement, and others reports, along with the notice of this meeting, have already been sent to the shareholders at their registered email address. I hope you have received the annual report. With the permission, I take them as read. Since there is no qualification, reservation, adverse remark, or disclaimer in the statutory auditor report and the secretarial auditor report for the year ended March 31, 2026, I take the liberty and consider both the report as read in the interest of time. In order to enable you to vote on the resolution, we have provided the e-voting facility through MUFG Instamate platform. The remote e-voting commenced at 9 a.m. on Thursday, August 2026, and concluded at 5 p.m. on Sunday, August 23, 2026. The voting rights were reckoned on the shares held by the member as on the cutoff date, that is Monday, August 17, 2026. In case you have not exercised your voting rights through the remote e-voting facility, I request you to vote within 15 minutes upon the conclusion of the proceedings. Since you have been provided e-voting facility, there will be no voting by show of hands as the meeting as per the statutory provisions. The statutory documents and the reports as required to be placed at the AGM are open for inspection electronically. Shareholders who wish to inspect this document may write to us at corp.secretarial@groww.in. I now invite Chairman Sir to address to the shareholders and deliver his speech. Over to you, sir. Thanks. Dear shareholders, 10 years ago, Groww began as a simple idea to make investing accessible to every Indian. Our journey has closely mirrored and contributed to the transformation of India's capital market as millions of new to market investors embraced investing in capital markets.
Today, Groww stands as one of the country's most trusted financial platform, catering to first-time investors, affluent users, as well as power traders alike. FY26 has been a defining year, strong financial and operational performance, and an important milestone in our journey into the public markets. I am pleased to report consolidated revenue from operations of rupees 46,446 million, a growth of 19%. Consolidated EBITDA grew to 27,464 million rupees, up 16% YOY, and consolidated profit after tax reached rupees 20,830 million, a growth of 14%. We delivered this while gaining market share and despite the regulatory changes of the previous year. Since 2016, we have democratized mutual fund investing and made it entirely digital. Today, our platform reaches investors across more than 97% of Indian PIN codes, commands a 43% market share in new SIPs created during FY 25-26, and holds a 3.4% share of retail mutual fund assets. We have also made direct equity investing and IPO participation seamless for millions of users. As custodian of millions of investor relationships, we know that trust compounds slowly and can be lost very quickly. Governance, transparency, and responsible innovation remains foundational to our growth. This year, we also incorporated the Groww Foundation, a Section 8 company, driving through our various CSR initiatives. Our success rests on our people, a young, dynamic team with an average age of around 30 years, where women constitute about 31% of our workforce. Looking ahead, we are focused on diversifying revenue, expanding our product basket, strengthening our wealth management offerings, and investing thoughtfully in artificial intelligence, always with human oversight and ethical guardrails. With over 10 products across the investment lifecycle, in-house technology, and 80% of new customers acquired organically, we hold advantage that are difficult to replicate. As we celebrate our 10th anniversary, I am confident our second decade will be even more exciting. I thank all our employees, customers, regulators, and partners, and warmly welcome our new shareholders. We recognize the responsibility that comes with the trust and remain committed to creating sustainable long-term value for all of you. I would like Roshan to take forward the proceedings from here. Thank you very much. Thank you, sir. Shareholders may note that since this meeting is being held through video conference and the resolution provided in the notice been put to vote through e-voting, there will be no proposing and seconding for the resolution. I will now brief you on various resolutions which has been proposed in the notice of the AGM. Once we finish the customary process of briefing on the resolution, we will invite the members who have registered to ask question or seek clarification. Ordinary business. Resolution number 1. To consider and adopt. Number A. Standalone audited financial statement of the company for the financial year ended March 31, 2026, together with the reports of the Board of Directors and the auditors report thereon. Number B. Consolidated audited financial statement of the company for the financial year ended March 31, 2026, together with the report of the auditors thereon. Resolution number 2. Appointment of Mr. Neeraj Singh, DIN 0770192, who retired by rotation and being eligible offers himself for reappointment. Special business. Resolution number 3. Appointment of Messrs. Nilesh Shah and Associates as the secretarial auditor of the company for a period of 5 years. Resolution number 4. Reclassification of authorized share capital and amendment of the capital clause of Memorandum of Association. All the above proposed resolution are ordinary resolution. The speaker shareholders will be unmuted and will be allowed to ask question when called upon by the moderator, according to the serial number provided. I request the members to kindly keep the question and comments in brief and not to repeat the questions which are already asked by the fellow members. I also request you to not to take more than 2 minutes. This will ensure that the members get enough opportunity to ask question and interact at the AGM.
May I now request the moderator to invite the speaker shareholder one by one. Roshan sir, thank you so much. Ladies and gentlemen, we will now commence the question and answer session. Members who have registered as speakers are requested to switch on their video while asking questions or seeking clarifications. Further, it is requested to restrict the questions or clarifications strictly to the items of business set out in the notice convening this annual general meeting. In case any member is facing technical difficulties with video transmission, they may ask their questions through audio only mode. If there is any connectivity issue at the speaker's end and we are unable to connect to the concerned speaker, we will invite the next speaker to proceed. Once the connectivity of the earlier speaker is restored, he or she will be requested to speak after the other registered speakers have completed their turns. We now invite our speaker member, number 1, Mr. Tushar Soda. We may request you to please kindly unmute your audio, switch your video on, and go ahead with the questions. Mr. Tushar. A very good afternoon to all. Am I audible and visible? Yes, sir. Thank you so very much for the confirmation. Very respected Chairman, sir, and stalwart and eminent members of the Board of Directors. Good morning, good afternoon. My name is Tushar Soda, and I have joined today's virtual AGM from Mumbai. At the outset, I congratulate Team Groww on its remarkable journey. The journey began with 4 founders, and within a decade, millions of stakeholders have been associated with the platform. In just 10 years, a simple idea conceived in a Bengaluru cafe transformed the investing landscape of India's capital markets. It is truly a matter of pride for shareholders that Groww now reaches PIN codes covering 97% of Bharat. I appreciate the employees, senior management team, and the board of directors for their exemplary leadership, valuable guidance, and focus on innovation and customer empowerment. I am confident that the future of our company is bright. Team Groww will continue to create sustainable value for all the stakeholders. Keep building, keep growing, and continue raising the bar. Chairman, sir, I had 4 or 5 queries relating to financials, and I am very happy to inform that the secretarial department has already replied to each of them in great detail. I appreciate the entire secretarial team for the delivery of the annual report and for promptly addressing shareholders' queries. Thank you, Chairman, sir, Board of Directors, and the secretarial team for this opportunity to express my views. Thank you so very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. This was Mr. Tushar. Going ahead with our next member to join us, we have speaker shareholder number 2, Mr. Akash Ravesh Hegde. Mr. Akash, thank you so much for joining us. We would also request you to please turn on your video, unmute yourself, and then proceed with the question, sir. Mr. Akash, I can see that you've been unmuted already. Yes. If you speak something, we should be able to get your voice, sir. Am I audible now? Yes. Yes, sir. Yeah. Thank you. Good afternoon, Chairman, sir, eminent board members, and the fellow shareholders. I'm Akash, attending the meeting from Bangalore. I would like to first congratulate the company on its strong listing performance and achieving the #1 ranking in terms of active brokers. This is a commendable achievement and reflects the confidence of stakeholders in the company's business and its leadership. I would also like to appreciate the secretarial team for presenting a detailed and informative annual report, which gives shareholders a clear understanding of the company's performance, strategy, and a future outlook. I have the following questions for the board and management. The #1 is, considering the company's performance, would the board consider rewarding long-term shareholders through a bonus issue or a share buyback in the future? And the second question is, how are the current geopolitical developments
including the situation in the Middle East, along with the fuel price movements, currency volatility, and changing regulatory norms impacting the company's business operations and outlook. Thank you, and I wish company continuous success in the years ahead. Thank you so much, Mr. Akash. Thank you. Ladies and gentlemen, the next person to be joining us would be member number 3, Mr. Prajwal Dhananjay. Mr. Prajwal, thank you so much for joining us today. We would be pleased to have your questions. I hope I'm audible and visible. Yes, sir. Yeah, thank you so much. Good afternoon. My name is Prajwal. I'm attending the meeting through VC from Bangalore. Respected Chairman, members of the board, and the management team, I would like to begin by congratulating the company on its impressive journey and achievements. It is encouraging to see a young and energetic team making a meaningful contribution towards changing the way India invests and creates wealth. As stated by the CEO, Mr. Lalit, Growth's mission to make investable accessible to every Indian is truly appreciable. The theme, Building India's Wealth, is also very apt, as it reflects the company's larger purpose of encouraging financial participation and wealth creation across the country. I would like to ask the following questions to the Board of Management. Number one, what are company's capital expenditure plans for the next 2 to 3 years? And my second question would be, what data protection and cybersecurity measures has the company put in place to meet regulatory requirements and safeguard the platform against cyber threats, data breaches, and internal fraud risks? Thank you. I wish the company, the board, the management, and the entire Groww team a continued success in the coming years. Mr. Prajwal, thank you so much. Your questions have been noted. Going ahead, the next person to be joining us would be Speaker Shareholder number 4, Mr. Sarvajit Singh. Mr. Singh, thank you so much for joining us today. Let us have your questions, please. Hello, Chairman sir, can you hear my voice? Yeah. Chairman sir, first of all, good afternoon to you, all the board of directors, all the staff of Billionaires Garage Limited and my co-fellow shareholders. सर, हमारी कंपनी का नाम सर एक ऐसा नाम है क्योंकि सर हमने खुद भी सर इसी ऐप के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो सर इन्वेस्टमेंट करी हुई हमारी जो है एक भरोसेमंद हाथों में है सर, इसका सर हमें पूरा विश्वास है। और सर जिस तरीके से आईपीओ के बाद, लिस्टिंग के बाद ये हमारी पहली एजीएम हो रही है, और सर इतने विस्तार से आपने बताया, और सर जिस तरीके से आराम से बंदा ट्रेडिंग कर पाता हमारी ऐप पे, ये सर एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी चेयरमैन सर यही कहना चाहूँगा कि आगे हमारी कंपनी बिल्डअप के लिए क्या क्या सोच रही है सर, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। बाकी सर ये है कि हमारी ऐप ने इतना भरोसेमंद बना दिया है लोगों को, और इतना अपने अपने आप काम करने वाला बना दिया है कि बंदा खुद ही अपनी ऐप पे ट्रेडिंग कर लेता है और आसानी से काम कर लेता है। ये सर एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये सर आप लोगों की जो मेहनत है, ये सर उसी का एक नतीजा है कि आराम से बंदा हमारी ऐप पे ट्रेड कर पाता है। बाकी सर आपकी नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से सीएस और उनकी पूरी की पूरी टीम ने मेहनत करके एक एक शेयर होल्डर को आपके सामने बुलवाया सर, इन लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हम आपसे जुड़े रहेंगे और इसी तरीके से हमारी कंपनी आगे ग्रो करती रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. The next person to be joining us would be Mr. Manjeet Singh. Mr. Manjeet Singh, thank you so much for joining us. Can we have your video turned on and can we have your questions, please, sir? My audible? Yes, sir. कंपनी की मैनेजमेंट टीम, सेक्रेटरियल टीम और माय को शेयर होल्डर, मैं सभी का स्वागत करता हूं। गुड आफ्टरनून सर। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है और जो जून क्वार्टर के आपने रिजल्ट पेश किए हैं वो भी एक बेमिसाल हैं। ईयर टू ईयर करीब 94% की ग्रोथ दी है आपने एक साल के अंदर। ईयर टू ईयर जून क्वार्टर जो पिछले साल का था उसके मुकाबले इस बार जो है बहुत अच्छा हमारा रहा है, और आगे 3 क्वार्टर में इसी तरह से हम आपसे
उम्मीद रखते हैं कि आगे भी इसी तरह से ग्रोथ रहेगी। हम जिस सेक्टर के अंदर हैं, इसके अंदर हमने किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं साइबर अटैक के लिए, क्योंकि हमारे साथ जो है देश से हर सिटी, हर शहर से हमारे कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सिक्योरिटी के हिसाब से साइबर अटैक से बचने के लिए क्या उपाय किए हैं, थोड़ा आप उस बारे में बताइए। ये जो आज का समय हमने आपके साथ साझा करा है, ये आने वाले टाइम में हमारी इन्वेस्टमेंट को मजबूत करेगा, इसकी हम आपसे आशा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। कैपिटल डिपार्टमेंट ने वेल एंड टाइम बैलेंस शीट बनाकर जिस जिस तरह से हमें आपसे जोड़ा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो है इस एजीएम को एक औपचारिकता नहीं रखा, बकायदा पेन दिया है और हमें आपसे जोड़ने के लिए लिंक और जो स्पीकर नंबर प्रोवाइड कराए हैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द स्केटियल टीम, थैंक यू फॉर द मैनेजमेंट टीम, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, going ahead, the next person to be joining us would be our speaker number 6, Mr. Narendra Singh Chauhan. Narendra ji, thank you so much for joining us today. We would be Hello. pleased to have your questions taken. Yes, sir, we can hear you. सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर। गुड आफ्टरनून चेयरमैन साहब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर। सबसे पहले तो मैं कंपनी सेक्रेटरी साहब का और उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए मदद की। सर ने लीडरशिप में हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। जिस तरह एक साल के अंदर आपने कंपनी को नई ऊंचाई दी, सर भविष्य में भी इसी तरह की उम्मीद करते हैं कि आप इससे भी ज्यादा कंपनी को ऊंचाई पर ले जाएंगे और हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपने अच्छे रिजल्ट दिए, अच्छे डिविडेंड दिया और अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद भी आ गई। सर मैं कंपनी सेक्रेटरी साहब का एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा। मैंने एक सिंगल रिक्वेस्ट में ईमेल के लिए उनसे ईमेल किया था, उन्होंने मुझे तुरंत हार्ड कॉपी प्रोवाइड करा दी सर। और हमारी सर किसी भी तरह की कभी भी किसी भी शेयर होल्डर की कोई भी ग्रीवेंसेस होती हैं तो कंपनी सेक्रेटरी उसका तुरंत रिप्लाई मिल जाता है सर। और सर इस माध्यम में जोड़ने के लिए हमें बहुत ही उन्होंने भाई सीरियल नंबर से बुला के बोला कि आपका नंबर आने वाला है सर। और सर मैं ज्यादा न कहते हुए मेरी कोई क्वारी नहीं, क्योंकि सर हमारी कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है और भविष्य में भी इसी तरह काम करते रहेगी। सर आगे 2-3 साल में हमारे कंपनी का क्या रोड मैप रहेगा सर, इसके बारे में थोड़ी बताएं। और सर आने वाले त्योहारों के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। Thank you, Mr. Narendra. Thank you. Going ahead, the next person to be joining us would be speaker number 7, Mr. Bimal Krishna Sarkar. Mr. Bimal, thank you so much for joining us. Let's have your questions, sir. We would also request all the speaker shareholders to please turn on the video if possible. Hello, audible, sir? Yes, sir. Sir? Yes, sir. Very good afternoon, all of you. I, Bimal Krishna Sarkar, joining from my residence, Kolkata. Respected Chairman, esteemed board members, KMPs, Company Secretary, and my fellow shareholders. Thanks to the Chairman for briefing valuable and informative presentation regarding performance and future strategy of the company. Thanks to the Company Secretary and Secretary Department for sending a hard copy of annual report well in advance and rendering excellent investor services. Sir, integrated annual report is colorful and informative. Now I come to the financial result on consolidated basis. Sir, total revenue increased by 19.40%. Profit after tax increased by 14.2% compared to previous financial year. The company has maintained its steadiness, both of its turnover and profitability, despite of many factors and challenges. We are very glad to see the growth momentum of the company, which is well reflecting in the share price. Chairman sir, what are your plans to grow the organization to further height? Congratulations on immense contribution to the CSR activities. Sir, your commitment to social development and sustainability
It is truly inspiring and it reflects the values Billion Brains Garage Ventures Limited stands for. Sir, best wishes, all of you, and I pray to God for good health of you, Chairman, and your management team, company secretary, and employees of the company. Thanks for patient hearing. Over to you for further proceeding. Namaskar, sir. Namaste, all of you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ladies and gentlemen, our next registered speaker shareholder to be joining us was supposed to be Ms. Lata Bharatne Gandhi. Unfortunately, she hasn't joined the meeting as of now. Hence, going ahead, the next person to be joining us with the queries would be speaker shareholder number 9, Mr. Santosh Kumar Saraf. Mr. Santosh, thank you so much for joining us. Let's have your questions. आदरणीय सभापति जी, उपस्थित निदेशक मंडल के सदस्यगण, अधिकारीगण और कर्मचारीगण, मैं संतोष कुमार साहब कलकत्ता से आप सभी को राम राम कहता हूं। आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे स्वास्थ्य में होंगे सर। सर, मैं आपके शेफों का भी आभार प्रकट करता हूं काफी अच्छी वार्षिक रिपोर्ट बनाने के लिए। उन्होंने रिपोर्ट तो काफी अच्छी बनाई सर, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। उसी में से मैंने 2-4 प्रश्न बनाए थे, वो मैंने आपको एडवांस में हमारे भेज दिए, और आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी का भी फोन आया था कि मीटिंग के बाद में जवाब देते। तो मुझे कोई खास बात नहीं कि मुझे कंपनी की पहली मीटिंग है ना, इसके बारे में विस्तार से बहुत कुछ जाना था, इसलिए मैंने ये प्रश्न भेजे थे। एक मेरा अभी आज के डेट में एक प्रश्न है सर, ये आप तो नाम लिख रहे ग्रो, और नाम आपकी कंपनी नाम बिलियन ब्रेन है गैरेज, तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये नाम कहाँ से खोजा कि देखिए अगर इसको डिवाइड करते हैं, बिलियन ब्रेन का मतलब हो गया बहुत बड़ा ब्रेन, और गैरेज का मतलब अपने गैरेज जिसको कहते हैं भी पार्किंग के हिसाब से, ये नाम कहाँ से आपने खोजा और कैसे रखा। और सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपकी मैनेजमेंट की इच्छा होगी, इस नाम को क्या तो चेंज किया, क्योंकि क्या होता है जब ग्रो के नाम से हम लोग देखते हैं ना, तो हमें शेयर मार्केट में भी बहुत तकलीफ होती है खोजने के अंदर में, और बिलियन ब्रेन जो नाम है जल्दी याद नहीं रहता है। जनरल मूव में क्या होता है, जो डेली नाम बुलाते हैं वही नाम याद रहता है। और एक चीज मैंने आपकी देखी, आपकी कई सब्सिडी कंपनियां भी हैं, जैसे ग्रो इन्वेस्टमेंट टेक प्राइवेट लिमिटेड है, ग्रो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ग्रो क्रेडिट सब टेक्निक, इनमें आपने कहीं भी बिलियन का नाम नहीं किया, तो इसमें ग्रो यूज किया आपने सर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विचार करिएगा, हो सकता है कोई कारण हो कि जैसे आपने एक पिक्चर आई थी उसमें देखे थे के नाम रखा था, उन्हें डबल के रखा था खुराना का, क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि नहीं, तो हो सकता है कि हो सकता है आपने भी जो ब्रेन रखा हो वो आपके लक के लिए अच्छा हो, हमारी कंपनी के भविष्य के लिए अच्छा। मैं इसमें तर्क में नहीं जाता, लेकिन कुछ नाम है क्या की तकलीफ होती है, मतलब एक तो ग्रो इजी नाम लगता है, एक बिलियन ब्रेन गैरेज जब मतलब हम लोग बोलते हैं, इसमें काफी बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है कि नहीं। तो इसके बारे में विचार करिएगा, बाकी तो आप बोर्ड में जैसा उचित समझे करिएगा। और मैं ज्यादा कुछ नहीं, यही मेरा एक मेन जो मैंने लिखा नहीं था, पढ़ा था कि ये आगे बात क्या है कि इसको कैसे है। और बाकी सीएफओ का आभार प्रकट करता काफी अच्छी बैलेंस देने के लिए, और आपकी कंपनी उनकी सिक्योरिटी टीम का भी आभार प्रकट करता हूँ लगातार टच करने के लिए। आपने ऐसी सिक्योरिटी टीम बनाई है जिसके बारे में कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि ऐसी टीमें बहुत कंपनियों में मिलती कि मैं साल के अंदर 380-90 मीटिंग में स्पीकर अटेंड करता हूँ, क्योंकि बाकी तो मैं 500 में भेजता हूँ, क्योंकि सब में तो पॉसिबल नहीं होती, एक टाइम में 2-2 मीटिंग आ जाती है। देखिए आपकी सिक्योरिटी टीम काफी अच्छी है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये सिक्योरिटी टीम इसी तरह बनी रहे और हमें फ्यूचर में इसी तरह गाइड करते रहे। सर, ज्यादा कुछ नहीं, आपने 2 मिनट का समझ दिया, मैंने 4 मिनट ले लिया। तो एक बार फिर फाइनेंशियल 26-27 आप सभी को शुभकामना देता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ फाइनेंशियल 26-27 हमारे जितने डायरेक्टर भाई बहन है, जितने भी कर्मचारी भाई बहन है, और जितने भी एसोसिएटेड भाई बहन है, उनकी फैमिली के लिए हेल्दी वेल्दी प्रोस्पर सेफ्टी के साथ व्यतीत होगा। और सर, आशा करता हूँ अगले साल और नए रिजल्ट नई मुस्कान के साथ हम मिलेंगे। राम राम। थैंक यू सर। थैंक यू।
This was Mr. Santosh Kumar Saraf. The next person to be joining us would be Mr. Sujan Modak. Mr. Sujan, let's have your questions now. Mr. Sujan. Hello, you can hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Good afternoon. Good afternoon. Namaste. Respected Chairman, other Board of Directors, I'm Sujan Modak. I'm attending this meeting from a residence at Kolkata. Very good result. Very young, energetic, our board members. Fantastic. That is the reason we have got 2 Ws. So Santosh ji must have got his answers. So young, energetic, double energy. So double W, no problem. Fantastic. आजकल ऐसे होते रहता है सर. चलाइए सर, बहुत अच्छी बात है. हम आपका साथ जुड़े हुए हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है. एंड द कंसेप्ट इज ऑल्सो न्यू. पुराना कंपनी का देखिए, बहुत बड़ा बोर्ड रूम, इतना बड़ा टेबल, सब माइक वाइक लेके सब बैठे हुए हैं, सामने नाम. अब देखिए कुर्सी में बैठे हुए हैं, हम भी कुर्सी में बैठे हुए हैं. वेरी नाइस, फैंटास्टिक, आई लाइक इट. Sir, एक दो questions है sir. What is the roadmap for next 3 years, if you can give us, for the investors community? And for particularly this year, if you can give a revenue growth guidance, that will be very nice. And in our system, how much AI-led technology and digitization we have incorporated, and how much is still can be done? So these are my 3 questions. So nothing to add more. And before I finish, I thank our company secretary and his whole team for doing a very good investor services to the investors community. Namaste. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks. Thank you so much. Ladies and gentlemen, this brings us to the end of all of the questions from all of the registered speaker shareholders. We will now take a short break for about 12 minutes, and our management will answer to all of the queries or clarifications sought by the registered speaker shareholders pretty soon. Thank you. Almost 10 years ago, in 2016, in a country with over 1 billion people, only 5 million people were investing in the stock market. Investing back then was complicated, jargon heavy, and felt like it wasn't meant for everyone. That's when 4 engineers came together with a simple question: can we make investing simple, transparent, and delightful for everyone? And that's how Groww was born. In fact, when we started, the idea was also very hazy. We'll build like, Amazon or financial services. The way you go to Amazon, Flipkart, you choose a product, click on the buy button, and then just make the payment. It's done, and you get the product. So we wanted to build something similar. But what exactly we will do, how we will do it, it all came, over when 4 of us started kind of talking a lot and brainstorming and talking to customers. There are a lot of people in India, but they don't invest in stocks or mutual fund. They always put money either in real estate or gold. We discussed that this is very simple, like people should do it, but why they don't? One thing was very clear. Everyone found that it was super complicated. Just opening an account was so difficult. And when we talked to a lot of people, the intent, the information, the awareness, I think everything was broken. We could feel that the next 10 years, 20 years, 30 years in our country, this will become a massive problem. By 2017, Groww launched mutual funds, direct-only funds, commission-free, and a simple, easy-to-understand platform. And it worked. When we launched in May 17, we thought that, if we can get 100 customers on Groww platform, like this will be like a super hit. But then in that month, we got 600. आपको एक feeling आ जाती है कि, this is like something, this is working, customers are loving it. Today, almost 9 million Indians invest in mutual funds via Groww. In a country with hundreds of apps, platforms, banks, wealth advisors, brokers, 1 in every 3 new SIPs is started on Groww. How did it happen? Was it luck? Was it timing? Or was it something else? Before thinking about the product or about company and everything, like all 4 of us spend lot of time in figuring out the value system that we need to have for the company. So one of the value system that we had in place is customer first and transparency. There was a customer who kind of called and said, why don't you have office in Patna? I was curious why would they want office, and so I started kind of chatting and so on. But what I got from that conversation was that you are such an important part in my journey, and I have never met you. We don't need to have office, but let's go to these cities, let's meet customers and let them see who we are. Our product became better because we were able to go out there and meet our customers. Cut to 2019. Groww had a loyal base of mutual fund investors, and the team was already preparing for the next big launch. But then came March 2020,
The world stopped, markets crashed, streets were empty. Amidst all that chaos, Groww launched stocks. Till then, there was no online account opening possible in broking. We kind of worked with the regulator also to make sure that when we launch, our account opening should be online. And then COVID hit, where lockdown also happened in India. And nobody was prepared for COVID kind of situation where they had systems which can actually open account online. And there was a time when only Groww was opening account for a few weeks. Then came the big IPO wave of 2021. Companies across every sector, tech, finance, fashion, were rushing to be public. We decided as a team that we want to launch IPO next week. And we did a war room for like 2-3 days and built it over a weekend literally. And by the end of it, we were able to save that kind of IPO season at that time. We had a double-digit market share in the first season itself. We always wanted to do something very high impactful. So, how many customers can you impact? We also come from tech and internet background, right? So we did not want to make some business which is very small or, which is very niche. We wanted to kind of get into a very large market and have very, very large impact. We are seeing people investing from Patna or Jaipur, Indore, Ahmedabad, right? Some people, by the way, put their Groww apps when they do Diwali Puja, when they are making Rangoli. On their birthdays, people would have their cake, in shape of Groww logo and so on. Once we landed, right, typically what you see is people opening up their WhatsApp and checking their messages. I saw that like in front of me, there were 3 people who was opening Groww and checking Groww. That was like something that I really like. Okay, now Groww is more important than WhatsApp also for some users. Some people, first time when they did their SIP, and then they send the screenshot to their parents. They shared the story that the feeling was, you score well in your school sports, or, you get your first job, you call your parents. And this was that kind of feeling, oh, I made my investment. I mean, that was the, story that, everyone now, market sabka hai. In just under a decade, that 5 million investor base, it's become 48 million. And of that, over 12 million are investing via Groww. 1 in every 4 stock investors choose this platform. Today, Groww is India's largest and fastest growing investment platform. It has empowered millions of Indians to grow and build wealth for themselves over the years. Groww, built for a growing India. Almost 10 years ago, in 2016, in a country with over 1 billion people, only 5 million people were investing in the stock market. Investing back then was complicated, jargon heavy, and felt like it wasn't meant for everyone. That's when 4 engineers came together with a simple question. Can we make investing simple, transparent, and delightful for everyone? And that's how Groww was born. In fact, when we started, the idea was also very hazy. We'll build like, Amazon or financial services. The way you go to Amazon, Flipkart, you choose a product, click on the buy button, and then just make the payment. It's done, and you get the product. So we wanted to build something similar. But what exactly we will do, how we will do it, it all came, over when 4 of us started kind of talking a lot and brainstorming and talking to customers. There are a lot of people in India, but they don't invest in stocks or mutual fund. They always put money either in real estate or gold. We discussed that this is very simple, like people should do it, but why they don't? One thing was very clear. Everyone found that it was super complicated. Just opening an account was so difficult. And when we talked to a lot of people, the intent, the information, the awareness, I think everything was broken. We could feel that the next 10 years, 20 years, 30 years in our country, this will become a massive problem. By 2017, Groww launched mutual funds, direct-only funds, commission-free, and a simple, easy-to-understand platform. And it worked. When we launched in May 17, we thought that, if we can get 100 customers on Groww platform, like this will be like a super hit. But then in that month, we got 600. आपको एक feeling आ जाती है कि this is like something, this is working, customers are loving it. Today, almost 9 million Indians invest in mutual funds via Groww. In a country with hundreds of apps, platforms, banks, wealth advisors, brokers, 1 in every 3 new SIPs is started on Groww. How did it happen? Was it luck? Was it timing? Or was it something else? Before thinking about the product or about company and everything, like all 4 of us spend lot of time in figuring out the value system that we need to have for the company. So one of the value system that we had in place is customer first and transparency. There was a customer who kind of called and said, why don't you have office in Patna? I was curious why would they want office, and so I started kind of chatting and so on. But what I got from that conversation was that you are such an important part in my journey, and I have never met you. We don't need to have office.
But let's go to these cities, let's meet customers and let them see who we are. Our product became better because we were able to go out there and meet our customers. Cut to 2019, Groww had a loyal base of mutual fund investors and the team was already preparing for the next big launch. But then came March 2020. The world stopped, markets crashed, streets were empty. Amidst all that chaos, Groww launched stocks. Till then, there was no online account opening possible in broking. We kind of worked with regulator also to make sure that when we launch, our account opening should be online. And then COVID hit, where lockdown also happened in India. And nobody was prepared for COVID kind of situation where they had systems which can actually open account online. And there was a time when only Groww was opening account for a few weeks. Then came the big IPO wave of 2021. Companies across every sector, tech, finance, fashion, were rushing to be public. We decided as a team that we want to launch IPO next week. And we did a war room for like 2-3 days and built it over a weekend literally. And by the end of it, we were able to save that kind of IPO season at that time. We had a double-digit market share in the first season itself. We always wanted to do something very high impactful. So, how many customers can you impact? We also come from tech and internet background, right? So we did not want to make some business which is very small or, which is very niche. We wanted to kind of get into a very large market and have very, very large impact. We are seeing people investing from Patna or Jaipur, Indore, Ahmedabad, right? Some people, by the way, put their Groww apps when they do Diwali Puja, when they are making Rangoli. On their birthdays, people would have their cake, in shape of Groww logo and so on. Once we landed, right, typically what you see is people opening up their WhatsApp and checking their messages. I saw that like in front of me, there were 3 people who was opening Groww and checking Groww. That was like something that I really like. Okay, now Groww is more important than WhatsApp also for some users. Some people, first time when they did their SIP, and then they send the screenshot to their parents. They shared the story that the feeling was, you score well in your school sports, or, you get your first job, you call your parents. And this was that kind of feeling, oh, I made my investment. I mean, that was the, story that, everyone now, market sabka hai. In just under a decade, that 5 million investor base, it's become 48 million. And of that, over 12 million are investing via Groww. 1 in every 4 stock investors choose this platform. Today, Groww is India's largest and fastest growing investment platform. It has empowered millions of Indians to grow and build wealth for themselves over the years. Groww, built for a growing India. Welcome back, ladies and gentlemen. We would now like to go over to the boardroom, to the management, to help us with the answers and the queries raised. Thank you. Lalit. The first regarding, the bonus issue and buyback, I think we currently have no plans for bonus issue or a buyback, but surely the board will consider all of these at an appropriate time in future. The second question regarding CapEx, I think we are a technology platform and a service company, essentially. We invest in CapEx as per business requirement and largely directed towards technology infrastructure, cloud capacity, cyber security, and data system, given our tech-led model. So now I hand over to Lalit for next few questions. Thank you, sir. And thank you all the shareholders for being with us today. I will answer 3 questions, but before anything else, I will answer the question on the name Billion Brains, Garage Ventures and Groww. I know it is very tough to call it out, but I'll tell you the story how we got to that. So originally the name of the company was Next Billion Technology, and then we came up with this brand name called Groww, and there is a story about that also कि उसमें double W कैसे आया था, and बहुत सारी story बना सकते हैं, but real reason ये था कि we did not have domain name Groww.in, so उसमें we added one more W and it became Groww.in, and eventually customers started liking it, so we kind of stayed with the name.
बिलियन ब्रेन्स नाम ऐसे आया कि हम जब when we were thinking of incorporating the company in India, so we used to like the word billion, so we wanted to create something with name billion, because we are population of billion plus people and we wanted to stand something for our country. But it's very tough to get the names, company names so easily. So typically your CA will call you and tell you, give 3 names, and we said billion, billion brains, billion this, billion that, and so on. And they check, और फिर पता था everything is taken, कुछ भी available नहीं है. तो फिर so we put billion brains, basically billion brains working for something, and then naam nahi mila, so we tried some more names. So we said, okay, put garage ventures, because Steve Jobs ne jab Apple start ki thi, so they started from a from their parents garage. So बोला garage डाल दो, तो billion brains garage भी नहीं मिला. फिर उसने बोला फिर क्या डाल सकते हैं, venture डाल देते हैं, because venture कर रहे हैं हम, right? We are building something. So billion बहुत बड़ा नाम हो गया, BGV. So billion brains garage ventures. But long term में ये भी ख्याल है कि Groww is one of the brands. So maybe in next 10 years हम लोग और नए brands बनाएंगे. तो billion brains garage venture should stand for more brands. और टाइम है, बट प्रॉब्लम समझ सकता हूँ मैं. इट्स टफ टू सर्च. Groww में हमने सॉल्व कर दिया. Groww में आप सर्च में कभी Groww सर्च करेंगे तो बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स आ जाएगी. Groww का टिकर भी अभी GROWW है, बट हम सोचते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. Internally we call it BGV, so you can probably try that. Yeah. तो दूसरा क्वेश्चन था, काफी लोग 2-3 शेयर होल्डर्स ने पूछा कि what is our long term strategy. So one interesting thing about Groww is कि in last 10 years our strategy has not changed at all. Like I remember जब when 4 of us when we sat down एक इंदिरा नगर में कैफे में जब हम लिस्ट बना रहे थे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और more or less like few things have changed कि product sequencing change हुई या कुछ change हुआ है, but I think the overall strategy has almost remained constant. But I will just tell you next 3-4 years में what we are thinking about. So first is like whatever kind of our focus is, like compounding on customer trust, which is like investing in our platform, which is mostly technology platform, as Gaurang sir mentioned about, right? So continuously investing in that, because everything we do there helps improving customer experience, like building better payments platform, or building better onboarding, or investing in AI and so on, right? So everything that we do there, investment in technology, helps us improve the customer experience. So that will be like one very, very big focus area. Or I would say that would continue to be our big focus area, जो हम पिछले 10 साल से what we have been doing, right? Second thing is over time. So when we started, we thought that okay, we'll build a very simple product, right? So a lot of beginner customers will come and so on. But over just in next few years, like we started seeing a lot of existing investors coming on the platform, and now today, as we speak, we get like we get a lot of new customers, but we get like lot of existing investors, lot of customers who are already kind of very affluent, and power traders and so on. So multiple cohorts of customers. So because our base is so large and we get like lot of new customers, people think wrongly that Groww has like lot more newer customers. But if you look at the absolute number wise, I think Groww has like lot many power traders, lot more affluent customers, and so you can also look at from the KYC data, right? So the amount of KYC that you used to do, and now the existing KYC that comes to Groww and so on. So that has been growing, and with that, what has also happened, the wealth per investor is also growing. Like affluent customers, the number of affluent customers on Groww has like increased significantly. Power traders have increased significantly. So in last 2-3 years, we've been building wealth management platform for our customers. So that will be one big focus area. Like by the way, if you're not aware, we have an investor relations website where we put live data of wealth of AUM on the platform, transactions happening on the platform,
SIPs and everything. So you can look at quarter on quarter live data there, which will kind of show you how AUM is kind of trending upwards. And that's why wealth becomes like our one of the top priorities. Number 3 is about leveraging AI. So the way, and that also kind of answers one of the questions, which is about how we think about AI. So what we have realized is that AI can help us in 2 ways. One is improving the customer experience. A lot of use cases that we were not able to solve through, like a common UX. Now, if you go to UX on your Explore page, it will look kind of similar to everybody, almost everybody. But what if you want to see something which is not present there? So AI can help you with that, and your customer support charts and so on, right? So if you call और आप फिर बता रहे हो कि अच्छा मेरा ये प्रॉब्लम हुआ है and all, what if AI already knows what your problem is, and like you don't have to wait to get your queries resolved. Automatically kind of we figure it out and answer your questions. So those are the kind of things on the customer experience side. And then on the development side, like so as Gaurang sir also said, that most of our people are like tech people. We are kind of building a platform, and then that is serving the needs of our customers. Now, what if you can build that platform faster? What if you can build that platform with much higher quality, test it better, and so on? So that's where AI is helping us. Our engineers are able to code a lot more. They can test faster. We can do a lot more revision cycles and whatever we think. So from concept to reaching in the hands of our customer, that is what we call product velocity, and that is kind of improving month on month, or in fact week over week, right? So app cycles are kind of getting shorter and so on. So these are the kind of top things that kind of keep running in our minds. And if you have any more questions, please feel free to write us. We are like a very open company for our customers. Like we have a lot of interactions with our customers, and we want the same thing with our shareholders also. Please write us, and we'll be very happy to answer. Thank you. Yeah, Harsh. So I'll answer a few more questions which are unanswered. One question was on the cybersecurity and the risk management. So while like we keep emphasizing, and you have noticed we are a tech company, tech is first. So this is our core thing, forte. But still in security and risk, you cannot be confident, overconfident. So you need to be paranoid all the time. So we invested in setting up large teams for both cybersecurity and risk oversight. We also operate with a multi-layered risk management framework, and we get regular audits, both internal auditors, third party, and then the regulators also audit us on different. And through this, we manage the complete risk frame. Another question was on the geopolitical conflicts and how is the changing geopolitical situation and the regulatory framework affects us as a business and affects us in future. So over the last 10 years as like running Groww, but before that also we have been the capital market for another decade before we even started. Right? So we've seen multiple cycles, multiple risks. What we have seen from a geopolitical and external, there are certain kind of risks which are short term. The things that you see around which are not dependent on India as an economy, our company's business models, they're very external. So they do affect our country performance of the market and eventually wealth building for our customers. But they're usually short term and they are cyclical. We do build features for people to understand, track, but we don't worry too much about the short term. In long term, we are very confident. Our country is significantly underpenetrated when it comes to having access to or participation in the capital market. So we continue looking at India as a good big opportunity for the growth. And from a regulatory changes point of view, over the last decade, we have been part of many regulatory changes. And I think all of them have built with the two intent in mind, which is one, protecting the investors, and second, growing the market, which is very much aligned with our objective, our purpose also. And being a tech company, we are able to adopt to the regulatory changes very quickly. We are able to build a very good customer experience in a safe environment. So these regulatory changes, while bring some kind of
discomfort in the short term because it's a change, people adopt to it, but in long term, it does help our investors, and we've been always forefront of building those changes. With that, we conclude all the questions asked by our shareholders. We thank all of the shareholders for asking questions and that's the chance to respond. Over to Thanks, Lalit and Harsh. I hope we have responded to all the queries and or clarifications sought by our registered speakers. In case any one of the queries or clarification is not addressed, we would request you to email to the company secretary on his email ID. Well, I would like to now conclude the 8th annual general meeting. I declare proceedings for the annual general meeting as closed. As mentioned earlier, the remote e-voting facility is available to shareholders for the next 15 minutes. I authorize Roshan Dave, our secretary, to receive the scrutinizer's report and announce the voting results. The shareholders who have not yet voted can proceed to vote by clicking on voting icon visible on the screen. The resolutions are set forth in the notice shall be deemed to be passed today, subject to receipt of the requisite number of votes. We thank all the participants for attending this AGM. Do take care, stay safe and healthy, and see you again. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.